इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जवाब देने के बाद माइक्रोफोन को बंद करना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जवाब देने के बाद है तो क्या होता है, अभी अभी सुबह एक छोटा सा बात हुआ है तो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा सत्र जो है 1:15 बजे तक थी 1 बजे तक था और प्रतिभागी सवाल पूछ रहे थे और 1:05 पे एक प्रतिभागी के पीछे से उन्होंने माइक्रोफोन बंद करना, माइक्रोफोन सवाल पूछा, माइक्रोफोन को बंद करना भूल गए। एक मधुर आवाज पीछे से आ गई, वो मधुर आवाज हिंदी में कह रहे, भाई आपका रिसोर्स पर्सन कब तक चलाएगा क्लास। मैंने इधर उधर देखा, यार पता नहीं किसको कह रहे हैं, मुझे ही तो कह रहे हैं। मैंने कहा था बहन जी गलती मेरा नहीं है, गलती जिस सज्जन का है जो सवाल पूछने के बाद माइक्रोफोन को म्यूट करना भूल गए। कह रहे वो मैडम भी काफी फास्ट है। वो कह रहे कि सर जी क्या बताऊं, अभी 1 बजे से लेके 1:07 से पीछे 3 बार रोटी गर्म किया था मैंने, नए नए रोटी, ये गर्म रोटी ही खाता है। मैंने कहा था रोटी के बीच में मैं कहां फंस गया, मैं आईसीटी का पढ़ाने वाला था। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, सवाल पूछने के बाद, जवाब देने के बाद माइक्रोफोन को थोड़ा सा बंद करके रखे और बाकी चीज तो चलता रहता है। और बीच बीच में तो इधर भी घूमो उधर भी घूमो, थोड़ा थैलो, बस वर्कशॉप चल रहा है। बट साथ साथ एक कलम एक कॉपी साथ में रख के बैठिएगा, क्योंकि मैं ये 2 सेशंस जो है वर्कशॉप मोड में चलाऊंगा। आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस 2 सेशंस इन वर्कशॉप मोड। सर वर्कशॉप मोड में अब देखिए, सुची शुक्ला जी ने ये क्यों दिखाना चाहते हैं, हाँ मैं एक बार देखना चाहता हूं यार, कुछ इनके मोबाइल में कुछ है, कुछ खासियत है। सुची शुक्ला जी, हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कुड नॉट कंप्लीट, मतलब एक्टिवेट करने के लिए कुछ कह रहे थे। चलो चलने दो, बीच बीच में मनोरंजन भी जरूरत है। यू इंडीड जॉब फीड भी है और स्पेस नहीं है भैया, एंड्रॉइड सिस्टम भर भर चुकी है। डॉक्टर सुची शुक्ला, बहुत अच्छी बात है, बाहर आने की कोशिश करो। अब बाहर बेचारे आ नहीं पा रहे हैं, यही वाली बात है, ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। मैं हमारे प्रतिभागियों से ये आग्रह करता हूं, ये काम ना करें। Okay, so don't worry about that. And I speak Siddharji, I speak English also. So don't worry about that. My problem is not English. Okay, so I speak both in both the languages also. Where are you there, sir? Can you just raise your hand, Siddharth? I can't see you over here. Yes, sir. Sir, my camera is not working. So Siddharth, my request is if you could able to, because I keep asking the questions for those people who could not, fine. Good. Right. There are 3 important messages I had given. And please respect Siddharth ji. I think probably he could not understand Hindi well. So better to, I'll mix up the thing in such a way that both the parties should not get, ultimately the message goes loud and clear to both of you. So this is 8-day orientation. ये 8 दिवसीय ओरिएंटेशन में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम इज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. I hope you kept the copy column with you, along with you. That's very, very important. Lot of things already, the questions have been shared with Tiwari ji. Okay, so please understand, if you don't understand my sessions, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, you could not able to do it. So I request all of you, please follow me carefully, listen and write down the points. So in ICT, called information communication technology, is it a theory, is it a practical, or is it what? So the national educational policy has given enough emphasis on 3 important factors. The first one is the technology integration in teaching, learning, assessment and pedagogy. राष्ट्रीय शिक्षा नीति टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को 3 स्तरों पे बताया था.
एक जो है टीचिंग लर्निंग असेसमेंट एंड पेडागोजी, नंबर 2 टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, नंबर 3 टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन रिसर्च. These are the 3 different areas. So, but here in these 2 sessions, I am going to sensitize you, orient you, and provide a hands-on orientation on what is expected to be done by the teacher to ensure जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो कहा था can be followed. This is very, very important point to be noted down. Okay, so what is there? We are all teaching, and it's things are happening. Many of us are, some may be newly recruited teachers, some may be old teachers. So there are 2 important things happened हाल ही में पिछले 4-5 सालों से. एक सबसे important वाली बात है 2020 में, in 2020 the corona period, till corona period we have been teaching and facilitating the learners in a conventional classroom teaching. And what is the conventional classroom teaching we is talking about? Conventional classroom teaching synchronous mode of teaching को support करता है. अब ये सारे बातों को नोट करके रखें. सिद्धार्थ, are you noting down? Siddharth Acharya. Yes, sir. Yes, sir. Siddharth, if you find that I'm speaking too much Hindi, which I feel it as a privilege being a South Indian, so tell me that I'll speak in English only. Okay? So I think a mix will be good. Thank you. I feel it as a privilege if somebody said, recently somebody told me, sir, जहां भी आते हो आप हिंदी बोलते हो, sir आपको अंग्रेजी आता है. So nowadays I feel it proud that yes. Anyway, the language is a medium for me, that's all. Okay, so the first point is that till 2020, most of our colleges, Viswavidyalay or Mahavidyalay, Snatak and Snatakotter, UG or PG level, most of the time our transaction will be confined to the 4 walls of the classroom and in a real-time environment. I sit in the class, and teachers are the students stand in the class. Students are sitting there, and classwork is going on. There's a lecture, there's a demonstrations, small group activities, large group activities, pen and paper examinations, so on and so forth. And little bit of online courses already था पहली बात. क्योंकि 2016 में भारत सरकार ने MOOCs initiative को लेके आया. In MOOCs initiative, what happened? Initially, they said some of the courses students can take from the MOOCs. What is a MOOC? Massive Open Online Course, which is an online course supporting the asynchronous mode of learning. कभी भी कहीं भी कोई भी डाउट है दोबारा पूछ लीजिएगा. If you have any doubt, please ask me once again so that I will explain. MOOC is basically the definition is it's a online course, and which is a asynchronous mode of learning. Why asynchronous mode? Because MOOCs courses are designed, developed, and delivered with the help of MOOCs courses are in a 4-quadrant approach. MOOCs courses are designed, developed, and delivered in 4-quadrant approach. In the 4-quadrant approach, what was the case as such? Okay, kindly look at this point, please. In 4-quadrant approach, what happened? Our MOOCs courses, everything is a self-study made, self-study based. So first time when the students got exposed to this self-study mode, they initially struggled, but fair enough, and slowly, steadily, things have been started working into that. So, अब जब 2020 तक हमारे सामने 2 ही विकल्प थे. अब तीसरा विकल्प था ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेस.
सो मूक्स कोर्सेस का क्या, इसका जो पेडागो, इसका तो मूक्स कोर्सेस आर डिजाइन, डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड with the help of this four quadrant approach. In this four quadrant approach, what happened? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। Yes, 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 Manish Bharti, जी सर। बोलिए। हाँ सर, अब आवाज आ रही है। मनीष, मैंने म्यूट कर रखा है। अच्छा सर। मंत्रालय से कोई फोन आया था ज्वाइंट सेक्रेटरी का, मैंने इसलिए म्यूट कर रखा था। ओके सर, ओके सर। डोंट वरी, क्योंकि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ तो वार्तालाप आप तक पहुंचाना अच्छा नहीं लगता ना। नहीं 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 सर, बिल्कुल हाँ, नहीं। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय हमारे हमारे संस्था जो शिक्षा मंत्रालय के तहत है, यस सर। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का फोन आया, इसलिए मैंने म्यूट किया था। ठीक, ओके सर, ओके सर। ठीक। बहुत डिग्निटी का बात है। हाँ सर, बहुत डिग्निटी का बात है। हम लोग अच्छा लगा है ये, हम ऐसे अफसर का no problem, no problem. So what happened? So the Swayam courses are designed, developed, and delivered using this four quadrant approach. But most of the Swayam courses, the requirement is self study mode. And it's and you know, these are the two options. So you have something called conventional classroom teaching in one part, and of course, as per some of the institutions have adopted the Swayam courses as per some 40% as per the UGC said, not completely. So that was asynchronous mode. These two things were there. And Corona came. इन कोरोना काल में क्या हुआ था, हमारे सामने एक सबसे बड़ा विकल्प आ गया, वो है completely classes were stopped, and so we have something called online, some of the online platforms we started using. So what is that online platform we are using to facilitate the synchronous learning? There are several platforms, जैसे जूम है, गूगल मीट है, अभी इसी में गूगल मीट में ही ये काम चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबएक्स, ये सारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, एंड दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर फैसिलिटेटिंग द सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग. ऑलरेडी एक सिंक्रोनस कन्वेंशनल क्लासरूम है, and this is the another synchronous model where we have we planned something in terms of the online platform. And of course, initially we struggled, because what happened, why we struggled? Not because of course, there are certain hardware issues are there are certain software issues are there, but we struggled more for the humanware issues. Abdul Saab, is it okay, sir? So we struggle more for the humanware issues. We very rarely talks about the humanware. So hardware, software to hai. Why humanware is very, very important? Because many of us, because there is a special software required, and 90, even 90% webcams are not working, microphone is not working, internet is very poor. And somehow initially we had some difficulty, and some of the difficulty has been overcome. And still we do not know microphone को बंद कब करना है, वेबकैम को कैसे चलाना है, वेबकैम को कभी आप, जैसे देखिए, जैसे मेरा मंत्रालय से फोन आते ही मैंने माइक्रोफोन को बंद कर रखा है. ओके, कभी कभी सुबह भी मैंने आपको बताया था कैसे कि वार्तालाप होता है कि मोहतरमे से, अच्छी बात है, ये तो कभी कभार हो जाता है, ऐसी बात तो नहीं है, नथिंग अगेंस्ट दैट. So that is initially, that was happened. And during that time only our national educational policy came. So what happened? So you have, there are two things now, synchronous and asynchronous. Synchronous के अंदर there are two options. One, conventional classroom teaching, where real-time things are happening.
and using this online platforms where the synchronous teaching learning is also happening. But in the synchronous teaching learning, I think you know what I've told you in the beginning. I'm going to conduct this workshop in sessions in workshop mode. Why? There is another thing which is coming up. Simply bhashanbaji chal raha hai. And bhashanbaji mein, of course, we are all interested in bhashanbaji. But the point is that we want something, because it's not my right to take your 3 hours time. Very important. My time is also very important, being a national level resource person, where I am teaching in almost 60 plus MMC centers. So, and what is important, people started saying online boring hai, offline shuru kare. So offline is also boring. So boring is common in both the cases, in online and offline. Why? Because the efforts are not made, sincere efforts are not made to make the process of learning impactful, engaging, interesting and challenging for the learner. आप नोट कर लीजिएगा ये सारे बातें, very important. Please note down. Please note down. Why the things are boring? Because most of the teachers have adopted these technologies only for the sake of that situation. Now it is going to be reality now, because Government of India under Rashtriya Shiksha Niti is talking about the blended mode of teaching. So the question comes here, so how do we ensure that this kind of environments are going to be created? So what all the skills and competencies we need to acquire to make the process of learning impactful, engaging, interesting and challenging for the learner. So only subject competency is not enough, friends. Many of you must be thinking that I'm a good subject expert. No. Everybody is having subject competency. Simply having a subject competency is not enough. You must have the necessary skills and competencies to reach to the learner. You must have noticed something for the last 20 minutes. I do a lot of hand gesturing, head movement, shoulder movement, because I enjoy teaching. I don't find difference between online class or offline class. Its class is important. That's all. Now you can see different options also. I'm going to demonstrate something to you. I'll give some hands-on activity for you, and I'll be asking you to do it, these things. So the point what I'm trying to say, I think unless and until you reinvent the wheel, we became obsolete, sir. Now, why I'm telling all these things? Because there are certain interesting things which are going to be used. This is the one which I want to say that. If you do not change as per the prevailing requirements, please note down this nice book. बहुत बढ़िया बुक है. जब भी मौका मिलता है तो इस किताब को डाउनलोड करके, इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा. इस किताब का नाम है Who Moved My Cheese by Spencer Johnson. What he's saying, change happens. हमारे सामने we have a wonderful option called National Educational Policy. हम देखते देखते हो रहा है. So acquire the necessary skills and competencies so that we can also could be part of that change initiative. But ये सारे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Monitor the change, adapt to the change, quickly change. And पंकज जी, लास्ट में क्या लिखा था पंकज मित्रा? quickly के नीचे
Enjoy change. अरे क्या बात है यार, enjoy the change. And my dad used to tell me something in my childhood. What he used to say that as long as we are enjoying the job, salary is the incentive for you. Here actually, of course, I don't say salary. The honorarium is it's an incentive for me. Being a professor getting 4.5 lakh rupees salary, the senior most professor. But I enjoy it. कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग कहते हैं सर नमस्ते नमस्ते, आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है सर, जब भी पैसा, मैंने कहा कोई बात नहीं, टोकन हॉनोरियम देते तो दे, तो कोई दिक्कत नहीं होता। कम से कम आपने तो मेरा 26 AS में तो बचा लिया, आपने टैक्स ना देने से तो बच गया मैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट एंजॉय इट। एंड सो माय पॉइंट इज दैट इफ यू एंजॉय, थिंग्स कैन हैपन, बिकॉज़ टीचिंग कैन नॉट बी मोनोटोनस। Students are not at all liking monotonous mode. So what teachers, what students are liking? What the students' expectations? So to meet the expectations of the students, what we want to earn, we want to learn the digital skills and competencies for the interactive and personalized mode of learning. And this applies for all disciplines. Don't think that Professor Srinivas is from computer science, probably it will be working. No, this is domain neutral. Sciences, social sciences, humanities, engineering, medical, law, management. I teach everywhere. How to teach? What are the things to be added to teach? Okay, so let's go one by one. Some of the things already we know. Let me start with one small example of this. And the link of this one I am sharing with you in your chat box. Okay? And अगले 3 मिनट तक ये मत पूछिएगा मनीष जी कहते हैं सर आपके तो वाणी बंद हो गई। मनीष जी मैं कुछ बोलूंगा नहीं आगे, अगले 5 मिनट तक मेरा वाणी बंद नहीं हुई, मैं बंद कर रहा हूं। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो अभी मैंने लिंक आपको दिया था, नेक्स्ट 3 मिनट्स, अभी मेरे घड़ी में 2:29 हुआ है, 30 होने, 2:30 बजने वाला है, और अगले 3 मिनट तक इस लिंक को ओपन करके देख लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। What is this link is all about, and why I am showing this link, and what is the context, मैं आपको अगले 3 मिनट के बाद बताता हूं। Your time starts now. 3 मिनट के बाद, and everybody should confirm that they have opened and watched this video, watched the site. Then I will explain what are the things need to be done. After 3 minutes, I'll be asking some questions on your chat box. Please watch this, go through the site carefully. Yes, open, sir. Yeah. No, but go through it. Open some of the links. Open some of the other details also. Sir, I'm not able to open the link. सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है सर। अरे सुभाष जी मैंने कुछ बोला नहीं यार, अभी तो मैंने वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि सर मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ सर। मैडम क्यों आप लिंक के ऊपर क्लिक किया कि नहीं किया? आप लिंक के ऊपर क्लिक किया नहीं किया बाजी? नो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक। Sir, it's not opening.
No, why it is because I could able to open on my screen the same thing. I have done it. I could open it. You do one thing, professors. Type in new window, Professor K Srinivas.in. It will automatically open. Sir, I want to ask one thing. Actually, I'm trying to open on my mobile. So that's the problem. Madam, this is device neutral. This Okay, is sir. device neutral. Yeah. It's Okay, opening sir. in my. It is opening from my Airtel also, madam. Okay, sir, I'm trying. Please try, madam. Please try. Because this is very important. Everybody has to understand the concept behind this. If you still, I think Dr. Nancy, if you still the problem persists, open in a new incognito window. Open in a new incognito window. See, from my mobile, it is opening. My mobile, it is opening. Yeah. Sir, I also opening, but I couldn't Sir, open. now it's opening, sir. Now it's opening, sir. There's so many course अभी बताने topics, की sir. जरूरत I've opened. नैन्सी मैंने पूछा नहीं आपसे. मैं जब पूछूंगा तभी बताना है. Okay. Just open it. That's all. Okay. आप उसको एक उसमें से कुछ चीजों को Okay, क्लिक sir. कर. Thank you. Please. Now 3 minutes have passed. I will be writing the 3 questions on your chat box. The question number 1, because there are 3 questions I'll be asking. Only you want to answer yes or no only. First question I have typed. The question number 2. Answer yes or no only in the chat box. Second question. Second question already I typed. I'm asking the question. Neha Grover, please mute, madam. Please mute yourself, madam. Sneha Grover. Sneha, please mute yourself. Okay. The question number 3. लगे पता किਵੇਂ करना शेयर लिंक लगे YouTube देखो सो मैं तो पता मैं 10 दिन की होंगी तेरे Neha, शेयर करते हैं सारी लिंक अपडेट हो जाता है Neha, please mute yourself. Neha, अप्रैल shall I stop my class? वैसे जरूरी नहीं है नहीं का जरूरी नहीं है लिंक लाना गूगल को लिंक के अंदर जरूरी नहीं है मैम 15 तो 24 अप्रैल Neha ji, please offline yourself. Mute your mic. मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी Anand ji? रेफरेंस ही पाना कुछ नंबर
No, this is not good. This is not good. सर वो ट्रांसफर कर दीजिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा अंडर द बैनर एक को बोल दीजिए अच्छे मैम बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो मुझे ट्रांसफर कर दीजिएगा, मैं खुद करूंगा साहब सबको। मुझे को-होस्ट बना दीजिएगा। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेहा जी म्यूट योरसेल्फ। प्लीज म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। हिंदू HINDU यूनिवर्सिटी वाराणसी, वाराणसी स्नेहा ग्रोवर प्लीज म्यूट। RANA देवेंद्र सिंह यादव, देवेंद्र सिंह यादव, देवेंद्र सिंह यादव म्यूट कर लेना यार आप भी। व्हाट इज दिस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देवेंद्र जी आप क्या कर रहे हो? जी सर। अभी 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 क्यों दिखा रहे हो ये सारे? आपका कैमरा तो कि दिखाने की, आप इसको पूरा ट्रांसफर करो, मत दिखाओ ये चीज। ठीक है सर, प्लीज आप इसको प्रेजेंट मत कीजिएगा प्लीज। ओके सर। ओके ओके सर। प्लीज प्लीज आप वहां से बाहर आ जाओ। मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा था, तिवारी जी, संजय तिवारी, ओके ये बार बार तिवारी जी मुझे को-होस्ट बना दीजिएगा यार। को-होस्ट बना दिया आपने? आपको बना दिए को-होस्ट सर। ओके ओके ओके। बिकॉज़ द प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, I request all of you, please mute yourself. When I said mute, please mute yourself. Okay? And I think unfortunately, even after so many days, we do not know all these things. That is very unfortunate, unfortunate. Okay? मैं नाम ले रहा था स्नेहा ग्रोवर का। ओके सर। Please don't do that kind of a things. ठीक है? Okay. So I asked some questions over there. और there are two questions I asked. पहला प्रश्न आप लोगों ने कहा था कि नो कहा था। सेकंड प्रश्न आपने कहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तो what I told you, the second question is, it has got some thing like there are social media contacts are available. So what is this all about? This is basically a asynchronous learning environment. मैंने मेरे क्लासरूम के लिए बना रखा है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है। सर क्यों बनाना पड़ा? ये आज नहीं, दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट 15 years बैक। 15-16 साल पहले ये हुआ था। ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी नाउ, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के फोटो के नीचे क्या लिख के आ रहा है? I do not teach anyone. I only provide the environment in which they can learn. Thank you, ji Kavita ji. Thank you very much. So what I'm trying to say that this is the motive on which I have created this environment. इस environment को बनाने के पीछे दो बड़ा issues था। सबसे बड़ा issue ये था, the first and foremost biggest problem is my class time is limited. हफ्ते में मेरे पास 3 क्लासेस थे, 1-1 घंटे के क्लास हुआ करते थे। Within 1 hour, I could not able to complete my class. Why? Because मैं क्लास के दौरान
बेसिक्स भी मैं ही पढ़ाता था, एडवांस लेवल भी मैं ही पढ़ाता था, एप्लीकेशन लेवल भी मैं ही पढ़ाता था, कॉन्सेप्ट भी मैं ही एक्सप्लेन करता था, आइडिया भी मैं देता था, स्किल भी मैं करता था, सब कुछ मैं ही करवाता था, करता था। तो समय काफी नहीं था। और सेकंड प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स भी स्लो लर्नर्स है, एवरेज लर्नर्स है, गिफ्टेड लर्नर्स है, तो इस तरीके के कई सारे इश्यूज थे। देन मैंने सोचा था, व्हाई डोंट आई क्रिएट एन एनवायरनमेंट which is flexible, adaptable, personalized रहे and engaging learning experience students को दे दे। क्या चीज मैंने कहा था? Flexible, adaptable, personalized and give the engaging learning experience to the learners। क्योंकि एनवायरमेंट, अभी क्योंकि क्लासरूम को मैं क्लासरूम का ये सप्लीमेंटिंग कर रहे हैं। I am not going to replace my conventional classroom because everything cannot be done in conventional classroom. That is pretty sure. So I created because the expectations of the students are more, expectations of parents are more. तो मैंने क्या किया था? Why don't I create an environment to create like this? Or while creating this platform, there are certain important, interesting things I considered. I request the participants, please read out this. आप अपने लिए पढ़ लीजिएगा, मेरे लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। I request the participants, please read these things first. So the environment Professor K. Srinivas.in is a online asynchronous environment. Means you have only recorded lectures there, recorded video lectures, recorded text material. Whenever they have a doubts, I could able to answer. And of course, I've never conducted any assessment, but yes, there is a provision for conducting the assessment also. Please confirm my voice is reaching to all of you. Yes, sir, it's audible. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Okay. So what I'm trying to say that this is the environment. In this environment, so what are the factors I consider? क्योंकि मुझे students को ये बताना है, जब तक मैं क्लियर नहीं हूं, स्टूडेंट्स को मैं क्या बताता हूं? तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो है, अच्छा चलो मैं बाद में बताता हूं बात। तब जब ये बन गया था, मैं जब स्टूडेंट्स को कहा था, 4-5 अच्छा बच्चों को मैंने ये प्लेटफॉर्म दिखाया। मैंने इनको कहा था कि ये प्लेटफॉर्म आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर के लर्निंग को सपोर्ट करेगा। तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर इससे मतलब हमें क्लास में आने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मैंने कहा था क्लास पे पक्का आना है, और बट क्लास में आना है प्रिपरेशन के साथ। प्रियंका, समझ में आ गए कॉन्सेप्ट को? हाँ, तो क्या है कि स्टूडेंट को मैंने ये कहा था, इसके जो एसिंक्रोनस लर्निंग के अंदर जितने सारे जो कंटेंट है, मतलब जो चीज, अच्छा जब स्टूडेंटों ने 2-3 बड़े सवाल पूछा था, तो इन्होंने कहा था कि सर ये होने के बाद आप क्लासरूम को बंद कर दोगे? मैंने कहा था नहीं, बंद नहीं करूंगा। तो सर आपका तो 2-2 तनख्वाह मिलेंगे कि एक ही तनख्वाह से चलाओगे? मैंने कहा था बेटा कैसे? देखिए स्टूडेंट 15 साल पहले भी यही सवाल पूछ रहे थे, आजकल तो हमारे टीचर भी यही सवाल पूछ रहे थे मुझे, कह रहे सर हमारे विश्वविद्यालय एक ही तनख्वाह दे रही है, 2-2 काम मैं क्यों करूं? अरे 2-2 काम 20-20 काम नहीं है। अब जो भी, अब देखिए लॉजिक्स मैं समझाता हूं। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस वन? द लॉजिक इज whenever we are explaining a concept, we explain in 3 levels. कैसे? फर्स्ट बेसिक समझाते, बेसिक समझ में आने के बाद एडवांस में जाते, एडवांस में समझ में आने के बाद एप्लीकेशन में जाते हैं। बेसिक, एडवांस्ड, एप्लीकेशन। ओके,
एंड हर लेवल पे, बेसिक में, एडवांस में, एप्लीकेशन में, समटाइम्स हम कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, समटाइम्स हम आइडिया एक्सप्लेन करते हैं, और स्टूडेंट को कुछ कभी कभार टास्क देते हैं, स्टूडेंट को स्किल बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट, आइडिया, skill and task. So all these things we are explaining to the students in the classroom only. That was the current scenario. So what I want to do in this case is, if the basics are difficult to understand, many times it is happening. Many times it is happening. So what I am going to do, I am providing a video material to my students. तो एक स्टूडेंट ने ये सवाल भी पूछा था, सर इतने सारे वीडियोस बनाओगे के सुबह से लेके शाम तक? मैंने कहा तब नहीं बेटा, किसने कहा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा? बट वीडियो को बनाने से जगह मैं एग्जिस्टिंग वीडियोस को यूज, जहां जहां ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, इस वीडियोस को यहां से मैं यूज करूंगा. ये भी नोट कर लीजिएगा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस. This is what I am talking about, skills and competencies. Okay, so first of all, my conventional, I am going to create one conventional, I'm going to create one asynchronous learning environment supporting my conventional face-to-face classroom. This is point number one. And this asynchronous, online asynchronous platform is supplementing and complementing to the conventional classroom. मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है. कभी कभार कन्वेंशनल क्लासरूम में पहले पढ़ाता हूं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक्टिविटी देता हूं. उल्टा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक्टिविटी देता हूं और फेस टू फेस क्लासरूम में वो लैब एक्टिविटी करवाता हूं. तो दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड, सपोर्टेड टू ईच अदर. तो टू हैव दिस कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग, टू हैव दिस एसिंक्रोनस लर्निंग, मुझे तो रिसोर्सेस की जरूरत है. तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा था भाई यहां से मैं लूंगा. ठीक है, चलिए वो तो बात हो गई. इसके बाद क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने 5-10 मिनट उस साइट को ओपन करने के बाद बोला, सर मैंने साइट को ओपन करके देख तो रहा था सर, इसके अंदर वीडियोस है, बट ऑल द वीडियोस आर नॉट सिंपल वीडियोस, दे आर ऑल इंटरैक्टिव वीडियोस. मैंने कहा था बेटा व्हाट इज इंटरैक्टिव? तो एक ने कहा था सर बता, समझा दो सर इंटरैक्टिव क्या होता है. तो इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस डाला था, जैसे क्लासरूम में क्या होता है, मैं व्याख्यान देता रहता हूं, व्याख्यान के बीच में इफ देयर इज सम डाउट, आई एम आंसरिंग द डाउट्स. जैसे आप लोगों ने कहा था सर आपका साइट नहीं खुला, और नैन्सी कह रही बाद में सर खुल गई, और कई लोगों ने कहा था नहीं खुला, नहीं, ऑल दिस थिंग, दैट्स हाउ द इंटरैक्टिविटी नीड टू एस्टैब्लिश. Similarly, in this asynchronous learning environment, I have uploaded one video, but उस वीडियो में कुछ डाउट्स मैंने स्टूडेंट्स को पोस्ट किया था. Okay, so why? Because I'm going to create a flexible, adaptable, personalized and engaging learning experience to the learner. Note कर लीजिएगा. What are the 4 important things I want to create? Flexible, adaptable, personalized and engaging learning experience. Okay. और उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा था सर ये तो काफी है क्या, इतना ही है क्या, और कुछ तो नहीं है? नहीं है. लुक एट द लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट को 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा. I request all the participants, please read that last point, please.
This is the main basis of the platform. What it is saying, see, to enable this online asynchronous learning platform, you need resources. The resources could be video resources, the resources could be text resources, or anything else. But आपने देखे सेकंड लाइन में, मैं ये माहौल खड़ा करना है, the last one, because unless and until you set up that environment, क्योंकि you must be clear, इसलिए मैंने आपको कहा था teacher must be a practitioner, teacher must be clear about मुझे तो मेरे objectives, मेरे expected outcomes मेरे क्लास के बारे में तो clearly पता होना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तब ये जब तक पता होने से तो मुझे तो आगे तो लेके जाऊंगा, ताकि ये क्यों मैंने पढ़ने के लिए कहता हूं, ताकि स्टूडेंट जो है ये करके आ जाए। और यही नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, देयर आर स्लो लर्नर्स, देयर आर एवरेज लर्नर्स, देयर आर गिफ्टेड लर्नर्स। सो हर स्टूडेंट के अपने स्टाइल होता है पढ़ने का, अपने पेस, अपने स्पेस, अपने टाइम होता है। सो मैं स्टूडेंट्स को क्या मैसेज दे रहा हूं, यही साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मैं कहता हूं बेटा आपको इसके अंदर जो वीडियो दिया था असेसमेंट एक्टिविटी में दे रहा हूं, आप आराम से इत्मीनान से अपने घर में, जैसे देखिए आज सोमवार है, मैंने शुक्रवार को 2 वीडियोस, शनिवार को 2 वीडियोस अपलोड कर दिया था, सुबह तो मैंने वही क्लास लिया था इन लोगों का। The point what I'm trying to say that this is the way we can get the things in much more easy manner. Read out this point. Content is also, the students can engage the content in the variety of the formats. कुछ लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ऑडियो अच्छा लगता है, कर दो। Students can watch the videos and read the content multiple times to help they absorb the content. Siddharth, are you watching? Siddharth Acharya? Siddharth, your voice is not coming. Okay. So the last point मैंने क्या कहा था, wide variety of, हाँ सिद्धार्थ मैं आप ही को कह रहा था। जी सर। अच्छा अब सुनाई दे रहे हैं ना आपको, क्योंकि अभी आपका चेहरा, आपका माइक वेबकैम ऑफ है, इसलिए मैं बार बार आप ही लोगों से पूछ रहा था। तो यस सर, आई कैन हियर यू सर। मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, बट आई कैन हियर यू। कोई बात नहीं, बस वही कंफर्म कर रहा था। एंड लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वाइड वेराइटी ऑफ रेंज ऑफ मटेरियल कैन बी प्रेजेंटेड टू इंक्रीज द लर्नर चॉइस।
सो स्लो लर्नर के लिए जो मटेरियल है एवरेज लर्नर के लिए काफी नहीं है, and average learners material. So this is the way we can create. And the last one, so we have shared the resources, we have shared the environment, and the last one, and my online platform is also supporting the collaborative learning. My online platform is also supporting the collaborative learning. Because see, when the student comes to the विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, तो 4 जगहों से वो सीखते बच्चा, एक टीचर से, एक फेलो विद्यार्थी से, तीसरा डिजिटल एंड नॉन डिजिटल रिसोर्सेस से, चौथा माहौल से. So when the student come to the college or university, he learns from teacher in a conventional classroom, he learns from the fellow students, he learns from the digital and non-digital material, and he learns from the environment. So I try to create that similar environment over here. Okay? So what happened here? These two environments are supplementing and complementing to each other. Fine. And yahan, so this brings to me a new concept of blended mode of teaching. Actually, I blended these two things so that I could able to get the things done in much more. So where is this, why this blended learning concept came? The National Educational Policy recommends the adoption of a blended learning approach that combines the online and offline modes of learning. मिश्रित शिक्षा कहते हैं इसको. So that here, the students can able to access the material anywhere, anytime and all. And what is more important to me is this. UGC has sent something on 60-40 blended learning. It's up to 60% content in face-to-face mode. They said up to 40% content in the online mode. 60% कंटेंट फेस टू फेस में, 40% कंटेंट ऑनलाइन. 1 मिनट के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, इसको 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चीज. So what is the message I am giving here? Okay, you take 60, you take 40, no problem. But see, in both the offline environment, there are advantages. Online also there are advantages. And take the benefits of both and engage appropriately. At this point of time, I'm going to show you one small interesting video which talks about the blending of the environment. It's available on my site. Watch it carefully for 5 minutes. Watch this video carefully. We all are discussing about blended learning today. Priyanka, University teachers, college teachers, experts in the field, and even students
are thinking what kind of blended learning is expected. We are not here to discuss the term blended learning. Let us see about blend. Let us discuss about blending. I have a series of questions for you. Please see these two images and see which one you like more, A or B. If you have answered, let's proceed. Now which image do you like more, A or B? Hope you have answered. Now which image do you like more? Again A or B? Of course, there might be both kind of answers. Some may like A, some may like B. I recently checked with a group of teachers and majority answer was B. But some may say, I like both. If you are liking majority of B answers, then blend is beautiful. Blend of colors. It's not a mix. It's a blend. Blend is more aesthetic. Blend is more beautiful. And meaningful blend is more beautiful. If you have liked this image the most, then let's say we should aim for a meaningful blend. We should aim at beautiful things. Can my class be so beautiful? If we are talking about beautiful images, beautiful photographs, beauty in the nature, why can't my class also be beautiful? What could we do to make our class beautiful? And by beautiful class, what do I really mean? By beautiful class, I mean look and feel of the class, learning experiences, learning material, classroom organization, group formations in my class, interactions with learners, and even peer interactions. Can we make all this beautiful? Then the answer is yes. We can make our classes beautiful by a meaningful blend. Let us relate our images to our classroom situations. Straight lines versus curve. Which class do you like more? In which class do you think there will be more interaction? Peer-peer talk, eye contact with each other. Let's move to more meaningful blend. Let's not just stop at eye contact. Let's have close interactions among our learners. Please watch this one carefully, very important. Will that make more meaning into learning? Will their learning be more meaningful? If yes, let me blend my class meaningfully. We have discussed about what kind of blend is beautiful. Now let us see blend of what. What do we really mean by meaningful blend? Does it imply dividing our syllabus into online and offline? Does it mean teaching half of the syllabus or 60% of the syllabus or 80% of the syllabus in classroom and remaining online? What it really means. Blended learning is not dividing your syllabus. Blended learning is blending learning experiences. If we really divide some syllabus through online and some on campus mode, then also the situation is not really going to be good. Do we claim that either of the modes is more effective than the other? Then it's not so. Overuse of online learning is considered as a bad experience throughout the pandemic. Have we ever thought effect of continuous lecturing and one-way communication
with our students from 10 a.m. till 5 p.m.? Whether we use technology or not, could we move towards more interactive situations, more interesting situations, more meaningful learning experiences? If we are talking about online environment, is it possible to think beyond lecturing? Is it possible to think about some applications which are interactive? If we are talking about classrooms, then could we think about peer-peer interactions, some innovative strategies which will keep our learners engaged in learning? So is it really about technology versus pedagogy? Or could we integrate technology for an effective pedagogy? So I stop the video at this place where I am asking some question that is it technology or the pedagogy, or technology versus pedagogy, technology against pedagogy. So the point what I'm, of course, both of them are very important. Technology is also important. Technology without pedagogy of no use. Without pedagogy, technology of no use. So the question, I think, while developing the Professor K. Srinivas.in platform, I have ensured that these two things are going to be used there. Okay? Because I think this is very, very important to be understood by all of us. Because conventional classroom mein we have been teaching for many years. तो हमें तो पढ़ाना आता है. But when it comes to the environment, अच्छा यहाँ then let's try to understand. अब ऑनलाइन में मैंने आपको कहा था कि सर there are so many resources are available. चलिए यहाँ थोड़ा सा कुछ हैंड्स ऑन तक समझने की कोशिश करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, ऑफ कोर्स द कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस. Digital repositories of Government of India in higher education. Please note down these points, they are very important. Digital repositories of Government of India in higher education. Digital repositories of state governments in higher education. बहुत सारे राज्य सरकारों ने ये तो किया था. Then comes digital repositories of national international institution. UNESCO है, Asian Development Bank है, बहुत सारे MOOCs courses है. And last में एक concept called open educational resources. सर ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है. But what is more important is, ऑलरेडी मैंने प्रश्न पूछना हो गया था, अब दोबारा मत लिखिएगा कि इतना बार बार क्यों लिख रहा है आंसर. मैंने तो नहीं मांगा था, हो गया. मैंने आंसर पूछ के काफी टाइम हो गया. Okay, please don't write again and again, please. So what is the learning outcome of this session? So if the teachers need to understand, the various digital repositories of Government of India. विभा जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं क्या? आपने हाथ रेज किया था, श्रीमती विभा दवे. नो सर सॉरी, आपका हाथ रेज था कोई बात नहीं. चलिए, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, जो दिस ऑनलाइन एनवायरनमेंट के लिए हमें रिसोर्सेस की जरूरत है. अब इस देश में रिसोर्स के बारे में जैसे रिसोर्स की बात आते हैं, लोग कहते हैं अरे नहीं सर, स्टूडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, ये करना है वो. अरे कुछ नहीं करना है. First instance, you need not create any video at all. Videos are already available. वो कहाँ अवेलेबल है, किस फॉर्म में अवेलेबल है, कौन सा फॉर्म कहाँ यूज होगा, ये तो पहले हमें पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एक्वायर्ड बाय द टीचर्स. मतलब पहली टेक्स्ट. अच्छा, कई बार लोग कहते हैं सर, इज इट एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर द वीडियोस? नो, इट इज एप्लीकेबल फॉर द टेक्स्ट मटेरियल आल्सो. जैसे टेक्स्ट बुक है, हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को पहले पढ़ते हैं, पढ़ के पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई क्या पढ़ाना है. उसके बाद क्लास में हमारे विद्यार्थियों के स्तर के लेवल पे आते हैं, उसको समझाते हैं, है कि नहीं?
So similarly in online also, किसी ने वीडियो बनाया, पहले उस वीडियो को समझो, understand that video carefully. Somebody else must have prepared the video. And understand the video carefully. First point. After understanding the video, and share the video with your learners. Okay? चलिए, यहां मैं आपको छोटे छोटे एक्टिविटी देता जाऊंगा, सबको करना है. फर्स्ट एक्टिविटी स्वयं. स्वयं आप सबको पता है भारत सरकार की मूक्स कोर्सेस है, वे यहां अंडर ग्रेजुएट का कोर्सेस भी अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्सेस अवेलेबल. इसमें सोशल साइंस से लेके इंजीनियरिंग से लेके मैनेजमेंट तक कोर्सेस अवेलेबल है. बहुत अच्छे क्वालिटी का कोर्सेस अवेलेबल है, बहुत गुणवत्ता वाली कोर्सेस अवेलेबल है. उस कोर्स के अंदर बहुत सारे नवाचार भी है. बट तो इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा एक्टिविटी दिया था. क्या एक्टिविटी है देख लीजिएगा. ओपन HTTP मतलब swayam.gov.in, भारत सरकार ये स्वयं के साइट ओपन करना है. ओपन करके आपके सब्जेक्ट एरिया में कौन का कोर्सेस आर करेंटली अवेलेबल, और एक रेगुलर कोर्स, उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है. वन सेल्फ पेस्ड कोर्स, क्योंकि स्वयं के अंदर 2 टाइप्स की कोर्सेस आर अवेलेबल, रेगुलर एंड सेल्फ पेस्ड. और इसका आउटपुट चैट बॉक्स में देना है. आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं. दिस इज द एक्टिविटी ऑन स्वयं. गो अहेड, 5 minutes. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. I want to know the name of the course. Don't write just like that. Look at what Partha has done it. I want everybody should write down like this. What is the name of the course? Who is the national coordinator? What is the duration of the course? Please make it fast. If you have any doubt, please ask me. Very important.
So I want to know both the regular course, one regular course and one self-paced course. One regular and one self-paced course. Please do it fast, please. Make it fast. I think we will move further. Now the next one is, next important platform is Swayam Plus. Okay, next important platform is Swayam Plus. And in Swayam Plus, we have, very interestingly, in Swayam Plus platform, we have okay, when you open this Swayam itself, in Swayam Plus का link वहां से ही मिल जाएगा आपको, जिसको ओपन करना चाहते हैं आप लोग, and I'm sharing in your chat box now. Fine. In the Swayam Plus platform, what happened? Swayam Plus is very interestingly, Swayam Plus is basically, on all of them are technical, job oriented options are available over here. Okay, you can explore the courses. इसके अंदर कई सारे courses available है. Now this brings to me one of the hands-on activity on the Swayam Plus. और इसके लिए भी आपको मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूं. प्लीज ओपन स्वयं प्लस. ये एक्टिविटी है आपका स्वयं प्लस. देन in your preferred domain, see what are the free courses are available. At least दो की जरूरत नहीं, एक one free course. I'm not asking for 2, it's a 1. So one free course and one paid course. Identify one free course and one paid course and the duration. One free job oriented course. One free job oriented course and duration. Similarly, second one also, one paid course.
Also mention the type of the courses. कमलेश जी, मैं जानना चाहता था कौन सा कोर्सेस है। मुझे तो पता है फ्री और पेड कोर्सेस है, आप बता दो कौन सा कोर्स आपके डिसिप्लिन का है। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग फॉर सर। कमलेश शर्मा। Okay, fine. So no, we get to know that such kind of things are available. Similarly, there is another interesting platform which is very popular among the learners, and the name of the platform is Swayam Prabha. And Swayam Prabha platform is a very important, interesting platform of Government of India. And here actually what happened, there is one small introductory video I want to show. And this is a very, very important point to be noted down. And listen this. Please listen this one carefully. Priyanka, sound aa raha hai? Swayam Prabha, a direct-to-home or a DTH-based initiative, was launched about 7 years ago by the Ministry of Education. Yes, sir. With the aim of reaching the unreached, and also to promote a self-learning, which is one of the goals of NEP or the National Education Policy. Now, internet access or internet-based open educational content is out of reach for millions of users even today, simply because we are far away from the ideal 100%. Furthermore, what the issue is that high quality internet access is even a more privileged service today that's available to not many. So in this regard, Swayam Prabha fills a very, very important gap, because DTH or television-based technology is a very well established one. If you look at the content of Swayam Prabha today, we have thousands of hours of videos amounting to about hundreds of courses across 40 channels in many subjects, ranging from arts to science, from engineering to economics, from healthcare to skills, and so on. And the user has the facility, has the luxury of choosing a particular channel and a schedule upfront, because all of this is available on the portal. So the user can just go and search for the topic of interest and choose the particular day and the particular channel. Even more, we have the provision of archiving these videos for users who are unable to watch these videos for some reason, they have missed out and so on. So the archived videos on the portal allows the user to access videos after hours. And in fact, these are available. Okay, fine. This is about the Swayam Prabha. Details आप बाद में इसको पढ़ लीजिएगा. But what is important to me is not that. This one.
And I request all the participants, please take a note of, इसका screenshot ले लीजिएगा. And I request all the participants to take a screenshot of this, please. And I request all the participants to please take a screenshot of this. So what is important to me in this case is, so how to take the advantage of the Swayam Prabha? How to take the advantage of the Swayam Prabha? First of all, Swayam Prabha has video material. ठीक है, हम सबको पता है वीडियो मटेरियल स्वयं प्रभा के अंदर है. तो स्वयं प्रभा वाले मटेरियल को ढूंढने से पहले स्वयं प्रभा वाली वीडियो को ढूंढने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है. नंबर 1, आप यूजी लेवल पे पढ़ा रहे हो या पीजी लेवल पे पढ़ा रहे हो, स्नातक लेवल पे या स्नातकोत्तर लेवल पे पढ़ा रहे हो या रिसर्च लेवल पे ही पढ़ाते हो, और किस तरीके के कंटेंट को ढूंढना चाहते हो. नंबर 2. नंबर 3, और वो कंटेंट भी आपको बेसिक चाहिए क्या, एडवांस लेवल के कंटेंट चाहिए या एप्लीकेशन लेवल के कंटेंट चाहिए. So are you looking for content for basic level, advanced level और application level? उस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है. और चलो मान लीजिए बेसिक लेवल का कंटेंट है, तो are we going to use it this one for to explain the concept? कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूज करेंगे, या कोई स्किल को समझाने के लिए यूज करेंगे, या कोई आइडिया को समझाने के लिए यूज करेंगे, या कोई टास्क को समझाने के लिए यूज करेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपके पास नीचे रिमार्क्स आना चाहिए, और व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस इन योर क्लासरूम. अपने क्लासरूम के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपनाते हो. So I think any digital repository, whether it's a national or international, OER or normal, I think our lookout is going to be like this. And please try to understand that everything you cannot teach, मतलब इस दुनिया में जितने सारे चीजें आप नहीं पढ़ा सकते हो. मैं ये कहता हूं, किसी ने कई साल पहले एक बात कहा था, stop teaching, start facilitating. I think that is the need of the hour. मतलब आप स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर लीजिएगा. Okay, so sometimes they and enable them to learn in a self-study mode. ठीक है, चलिए. और इसके बाद अभी हमारे हमारा टाइम भी हो गया, मेरे ख्याल से चाय का अवकाश घोषित हो गया. तो हम एक काम करेंगे मित्रों, लेट्स ब्रेक फॉर टी for 15 minutes. Okay, let's have a good cup of tea or coffee, whatever it may be. Then by the time whatever activities which I have been given here, please complete those activities. Please complete those activities and come prepare for the afternoon, the second class. और बस एक छोटी सी चीज है. I think I'm not happy that you are not switched on the webcams. Number 1. Secondly, and many of you, अभी भी कई लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि माइक्रोफोन को ऑफ कैसे करना है. I'm sorry, this is not acceptable to me. 4 years gone. Even after 4 years, हमें नहीं पता कि वेबकैम को वेबकैम ठीक है, मैं मानता हूं, हो सकता है because you have some bad bandwidth issues. अरे माइक्रोफोन को ऑफ कैसे करना आना चाहिए मित्रों. Okay, with this I stop my session. Have a nice cup of tea or coffee. और पीछे मैंने एक्टिविटी जो दिया था उसको देख लीजिएगा.
और इसी दौरान एक और चीज ध्यान रखना, मैं चाय का अवकाश घोषित कर रहा हूं। ये मत पूछना सर के आवाज नहीं आ रहा है, चाय के दौरान मैं बोलूंगा नहीं, चाय पीऊंगा, चाय ऑलरेडी आ चुकी है। ओके अरशद भाई, और बढ़िया, तो मिलते हैं। We'll see you after 3:45. Bye bye.